all, welcome back to the square root problem of LeetCode 69. So let's see what it tells. That given a non-negative integer x, return the square root of x round down to the nearest integer. इसका मतलब हमें एक x इंटीजर दिया हुआ है जिसका हमें राउंड ऑफ करके उसका जो रूट वैल्यू होगा अंडर स्क्वायर रूट वैल्यू होगा उसको हमें रिटर्न करना है. द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल, मतलब नॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए. यू मस्ट नॉट यूज एनी बुल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन, दैट इज हम कोई बिल्ट इन फंक्शन लाइक जावा में मैथ डॉट पावर दैट टाइप ऑफ फंक्शन यूटिलाइज नहीं कर सकते. सो द इनपुट एक्स, इफ दिस इज इनपुट 4 इज द इनपुट, सो हमें आंसर में 2 रिटर्न करना पड़ेगा. अगर हमें 8 मिलते हैं इनपुट में देन हमें आउटपुट में 2 रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज द कंस्टेंट इज कि जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका फ्लोर वैल्यू हमें रिटर्न करना है. And this is the constraint 0, so it can start from 0. So I have already write the code in that side, so let's understand the logic that what it tells. Okay, so first it tells that we have to find it. So first we have to check the base case. The base case was that it can start from 0. So 0 से start होगा, that means we can tell that the base case starts from 0. So first we will be checking the base case. Here we have checked this base case if x equals to 0, because here this is base case. if अगर जो नंबर दिया गया वो अगर 0 है तो हमें सिंपली 0 रिटर्न कर देना है. सो सिंपली विल बी राइटिंग दिस लाइन, द बेस केस दैट इफ x equals to 0, if x equals to 0 simply then we'll be returning 0. देन नेक्स्ट अगर कोई और नंबर आया तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज द अप्रोच? द अप्रोच इज सिंपल. हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे बाइनरी सर्च की लॉजिक को. दैट मीन्स सपोज वी गेट अ वैल्यू लाइक 9, सो वी नो दैट दिस इज 3, जो कुछ ऐसे ही हुआ. एंड सपोज वी गेट अ वैल्यू लाइक 8, सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट? इसकी स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द लॉजिक. सो फॉर दैट विल बी डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस मीट. हम एक मीट बनाएंगे, दिस इज मीट, और मीट पे इसको डिवाइड करके 8/2, सो दिस इज 4. सो समथिंग अराउंड हम एट द इनिशिएशन और एट द स्टार्ट ऑफ 4 को हम कंसिडर कर देंगे. सो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इसे अगर प्रोग्रामिंग की तौर पे लिखे, सो वी राइट द सेम थिंग्स मीट एज लाइक दिस. मीट दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस right minus left/2. This is the formula to find the mean in every cases, in every possible cases. So first हम मीट को कैलकुलेट करेंगे, देन हम बाइनरी सर्च लॉजिक को लगाएंगे. दैट इज अगर मीट स्क्वायर मीट इंटू मीट, दैट इज मीट स्क्वायर का वैल्यू अगर इक्वल होते द इक्वल दैट इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स हम डायरेक्टली मीट को रिटर्न कर देंगे. देन विल बी रिटर्निंग द मीट, हम डायरेक्ट मीट को रिटर्न कर देंगे. एंड नेक्स्ट हो सकता है कि हमने जो भी वैल्यू मीट पे मिला, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सेम केस. वो वैल्यू या तो ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है. सो फर्स्ट अगर वो वैल्यू ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स इफ दैट मीन्स अगर एग्जैक्टली जो नंबर हमें दिया गया, लेट्स से द नंबर ऑफ 4 एंड ए 4 की इक्वल हो गया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से मीट को रिटर्न कर देंगे. अगर वो एक्चुअल में ज़्यादा नहीं इक्वल नहीं हुआ, दैट मीन्स ये थोड़ा सा लेस हो गया. दैट मीन्स इफ द दिस इज द कंडीशन, दैट इज मीट स्टार मीट, दैट इज द कंडीशन लेस देन 4. अगर ये 4 से कम हुआ, देन व्हाट विल बी डूइंग, सिंपली हम लेफ्ट को अपडेट कर देंगे बाय 1 वैल्यू. So we'll be updating the left, in that case we'll be updating the left by 1, that is meet plus 1. हम लेफ्ट को तब अपडेट कर देंगे और इन दैट केस हम सिंपली रिजल्ट पे मीट को असाइन कर देंगे. सो रिजल्ट that will be equals to meet. So this is the case, that is case 1, that is case 2, and the third case. केसेस ऐसे भी हो सकता है दैट वी हैव सच टर्म्स लाइक दिस कि जो मिड स्टार मीट का वैल्यू हुआ वो ज़्यादा हो गया, मिड स्टार मीट दिस इज ग्रेटर देन 4. दिस माइट बी द केस. इस केसेस में हम सिंपली राइट को डिक्रीज कर देंगे. सो विल बी जस्ट डिक्रीजिंग द राइट लाइक दिस, राइट इक्वल्स टू मिड माइनस 1, and we'll be getting the value. So at the end of the program we'll be simply returning the result. So if we just return the result, we'll get the answer. So we'll be running the entire program using while loop. So let's again write the code so that you can have a better idea line by line. Okay, so we are in the program and I'll navigate you all the section. Let's remove it. Okay, so that is the program, and first what it tells कि कोई भी प्रोग्राम अगर रन करना हो लीड कोड में, so we start making a object of that class solution 1.
and this is from where we declared. Now we'll be starting. Now notice here the constant is 0, that we can have the input 0. So first we'll be checking if x equals to 0, the age case. So simply we'll be returning 0. So if x equals to 0, then we'll be return 0. So हमने एज केस को रिटर्न कर लिया. नाउ हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर को सेट करेंगे. सो लेफ्ट पॉइंटर जो भी होगा लीस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी हैंडल द एज केस. सो जो भी लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट साइड का वैल्यू होगा, वो 1 से स्टार्ट करके हाईएस्ट अप टू द नंबर जा सकते हैं. दैट इज अगर 8 इनपुट में है सो 8 कैन बी द हाईएस्ट एंड 1 कैन बी द लोएस्ट. सो इन द लेफ्ट इज 1 and right, that is equals to a. Now we'll be initializing the result as 0. Okay, now we'll be starting our loop. So we'll be running the loop till that is greater than less than equals to left is less than equals to right, because we have to return the minimum floor value. So now we'll be calculating the mid, integer mid, that is equals to left plus right minus left by 2. So that is made. After that we'll be calculating if the meat is equal to the number we have provided. So if long, we'll be typecasting the number to long, that is if long mid star mid, that is equals to x. If that is equals to x, simply we'll be returning mid, return mid. If else if, now we'll be checking अगर a लेस हुआ नंबर से, जो भी हमने मल्टीप्लाई करके मिला, that is mid star mid, that is अगर लेस देन हुआ द नंबर वी हैव प्रोवाइडेड. सो सिंपली हम अपडेट कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर को नेक्स्ट हम अपडेट करके मीड प्लस 1 की पोजीशन पर सेट करेंगे. एज पर द बाइनरी सर्च, हम बाइनरी सर्च की जो प्रोसेस एल्गोरिथम होता है दैट वी आर अप्लाइंग. सो रिजल्ट को हम अपडेट कर देंगे मीट पे. एल्स में हैंडल होगा अगर एज ज़्यादा हो गया. सो उस केसेस में हम राइट को डिक्रीज कर असाइन कर देंगे एड माइनस मीड माइनस 1 की पोजीशन पे. Okay, and at the end we'll be just updating, returning the result, return result. So now let's check. Okay, it just compiled, so we'll be meeting in the next session.